Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Mad Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, today we are going to discuss about this question. This question is from class 12, third unit chemical kinetics, question number 3.2. Okay, student, read this question very carefully for the reaction. ये एक given reaction है जहाँ पर two molecule of A and B combines and forms A2B. The rate, ये rate दिया गया है एंड के इक्वल टू 2.0 इंटू 10 टू द पावर 6 मोल टू द पावर -2 एंड एल स्क्वायर सेकेंड इनवर्स कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन ये कंसेंट्रेशन है, ठीक है। ए की कंसेंट्रेशन इज 0.1 मोल लीटर इनवर्स एंड ये है बी का कंसेंट्रेशन जो 0.2 मोल लीटर इनवर्स पर है। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस्ड टू 0.06 मोल पर लीटर। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है जो ए है ना इसका रेट ऑफ रिएक्शन। तो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। देखो, फर्स्टली हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट को। द रिएक्शन इज 2a plus b, a to b. Okay, so the rate law is rate equal to k concentration of a concentration of b to the power 2. Okay, so the given rate constant is k equal to 2.0 into 10 to the power -6 mole to the power -2 liter square second inverse. Okay, so firstly initial rate law of this reaction is initial rate of the reaction. So we will find this portion firstly. Initial concentration or concentration of A initial is equal to 0.1 mole per liter and B initially A की concentration ये है and B की concentration equal to 0.2 mole per liter है, ठीक है। तो substituting the values into the rate law, यहाँ पर rate 1 equal to 2.0 into 10 to the power -6 mole to the power -2 liter square second inverse into 0.1 mole liter inverse 0.2 मोल लीटर इनवर्स। देखो, हम यहाँ पर ना सारे के सारे जो डिजिट है ना विथ यूनिट लिख रहे हैं क्योंकि जो भी कैलकुलेशन होकर आएगा वो यूनिट के रेस्पेक्टिव भी आ जाएगा, ठीक है। तो रेट 1 इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10 टू द पावर -6। इससे क्या होना कि आपके जो फाइनल आंसर आएगा ना इसमें यूनिट के लिए जो एरर होने की चांस है ना वो रिड्यूस हो जाएगी। सो जो आंसर आएगा वो परफेक्टली ठीक ठाक आंसर आ जाएगा। तो 0.04 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो फाइनली 8.0 इंटू 10 टू द पावर -9 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये इसका यूनिट एंड ये इसका फर्स्ट जो रेट इनिशियली जो रेट ऑफ दिस रिएक्शन है ये 8.0 into 10 to the power -9. Now calculating the rate of reaction after concentration of A is reduced to the 0.06 mole per liter inverse. Okay, so now calculating the rate of reaction after concentration of A is reduced to 0.06 mole liter inverse. Okay, so now change in
change in concentration of A del A. ओके, तो डेल ए जो चेंज है ना इसी को ही डिनोट करता है. तो वी कैन फाइंड आउट द डेल ए इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल. तो 0.1 मोल लीटर इनवर्स माइनस 0.06 मोल लीटर इनवर्स. ओके, तो फाइनल change in concentration of A is equal to 0.04 मोल लीटर इनवर्स है. ठीक है, तो चेंज इन B जो डेल B होता है, तो फ्रॉम द स्टोइशियोमेट्री मेट्री 1B, the mole of B consumed is half the moles of A consumed. देखो, ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ ए है ना, इस ए टू बी को फॉर्मेशन करने के लिए ये ना मॉलिक्यूल टू मोल्स ऑफ ए नीडेड टू प्रोड्यूस ए टू बी. बट बी की जो कंसेंट्रेशन है ये ए की हाफ है, तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि फ्रॉम द स्टोइशियोमेट्री, क्योंकि देखो यहाँ पर टू टू ए प्लस बी, तो ए टू बी, तो ये 2:1 हो गया ना. तो फ्रॉम द स्टोइशियोमेट्री 2A is to 1B, the moles of B consumed in half of the moles of A consumed. Okay, so now del B equal to half of del A equal to half of 0.04 mole per liter equal to 0.02 mole per liter. Okay, so new concentration of B, so B new is equal to B initial minus del B is equal to 0.2 mole per liter minus 0.02 मोल पर लीटर. तो इसका वैल्यू आ जाता है 0.18 मोल पर लीटर. ओके, नाउ कैलकुलेटिंग द न्यू रेट. तो कैलकुलेटिंग द न्यू रेट. नाउ rate 2 is equal to a new b new square. Now so rate 2 is equal to 2.0 into 10 to the power minus 6 into 0.06 into 0.18 square mole liter inverse second inverse. So 0.2 into 10 to the power minus 6 into 0.06 into 0.034 into 4 mole liter inverse second inverse. So now finally rate 2 is equal to 3.88 10 to the power minus 9 mole liter inverse second inverse. Okay, so the rate of reaction after
A is reduced to 0.06 mole, liter inverse is 3.89 into 10 to the power minus 9 mole, liter inverse second inverse. ओके, तो ये इसका फाइनल आंसर पार्ट 2 में, एंड ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर. ठीक है. होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू क्लियर ऑल द रिलेटेड डाउट्स. एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली. एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12. क्लासेस विल गोइंग टू स्टार्ट वेरी सुन, जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एजुकेटर. लेक्चर्स विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम. इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें. मिलते हैं डेमो क्लास में.